Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Owais, your course instructor. So in our last class, we started the topic of induction machines and we discussed the basic constructional features of the induction machine. We discussed about the stator and the different types of rotors which are uh, available for an induction machine. Apart from that, we also discussed the production of torque in an induction machine and some other concepts including slip and the slip speed. In today's lecture, we shall continue with induction motor, the three-phase induction motor, and we begin with the topic of equivalent circuit of an induction motor. So in order to find out the equivalent circuit of induction machine, we will first discuss the transformer model. There are basically two models. One is the transformer model and the other one will be discussed very shortly. And the two models will then be connected together in order to find out the total equivalent circuit of an induction machine. So induction machine is also called a rotating transformer due to the fact that the induction phenomena in induction machine is pretty similar to what is happening in a transformer. तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होता है आपके पास रोटर में वो काफी हद तक इनफैक्ट is exactly the same as in transformer. So therefore the equivalent circuit is going to be pretty similar to the equivalent circuit of a transformer. And please remember that the induction machine is called a singly excited machine due to the fact that we are providing power only to the stator circuit. So there is no external or secondary power source which is being supplied, as was the case in synchronous machine, because synchronous machines are called doubly excited machines क्योंकि आप सोर्स एक पावर सोर्स स्टेटर पे लगा रहे हैं और दूसरी आपको फील्ड पे भी एक सोर्स अप्लाई करनी पड़ती थी, ठीक है, in order to have field current. Here you have the phenomena of electromagnetic induction. Okay, now if you have a look at this equivalent circuit, you will see that there are some resistances. This R1 is the resistance of your stator, whereas X1 is the leakage reactance of the stator. ठीक है जी. दूसरी साइड पे देखेंगे you have XR and RR and the rotor is actually shorted क्योंकि current, so that current can flow. ठीक है, this is what is actually happening in a practical induction motor. Okay, now there is another effect. Please have a look at this curve. This is the magnetization curve of an induction machine, and it is here compared with the magnetization curve of a transformer. So this curve is actually between the magnetomotive force and the flux. And if you compare the two curves, the one for the transformer and the other one for the induction machine, you will see that the slope of this curve for the induction machine is much more shallower than that of the transformer. Okay, this, what does this mean? This actually means कि अब आपको यहाँ पे ज़्यादा effort करनी पड़ेगी. You have to apply more magnetomotive force in order to have the same flux. For instance, if you want to have this flux, this level of flux, for instance, so this means that you are at this point, okay, then on this curve you are here. So if you want to find out the magnetomotive force for this curve, this is going to be somewhere here. ठीक है जी, मैं roughly आपको यहाँ दिखा देता हूँ. So somewhere here, and whereas for this curve, this will be somewhere here. So now you see that the magnetomotive force required for the induction machine is much larger as compared to the magnetomotive force for a transformer. So this essentially means that more current has to be passed, more magnetizing current will be required in order to produce the same flux level. Let's discuss this further in our next slide. So as discussed in the previous slide, we now need a relatively higher magnetization current in order to obtain the given flux level, okay, which essentially means that this XM, okay, the magnetizing reactance, will have a much smaller value than it would in an ordinary transformer, okay, so that IM can actually increase. Apart from that, let's have a look at the two voltages. This is the voltage E1, the internal primary voltage at the stator side. Okay, this is the stator voltage E1, and this is your
voltage at the rotor side, and they are linked with each other. They are coupled magnetically coupled via this coefficient A effective. Okay. And this A effective can actually be calculated comparatively easily for a wound rotor, but if you go for a cage rotor, then it is pretty difficult to find out this A effective. But don't worry, we are not going to find out this A effective. We will have actually some other means through which we shall be able to solve this equivalent circuit that we shall discuss in the upcoming slides. Okay, now on the rotor side, this ER actually produces a current flow in the shorted shorted rotor or the secondary circuit of this machine. So basically, you see this is pretty similar to the equivalent circuit of a transformer. Where it differs, it actually differs from the transformer equivalent circuit in the effects of varying rotor frequency on the rotor voltage ER and the rotor impedances R and JXR. We shall have something to discuss about these two parameters RR and JXR in our next model. So having completed the first equivalent circuit or the first model, which was the transformer model, now let's discuss the rotor circuit model in order to find out the equivalent circuit. So in an induction machine, you know that when a voltage is applied to the stator winding, a voltage is induced in the rotor winding of the machine. And in general, the greater the relative motion between the rotor and the stator magnetic field, the greater will be the resulting rotor voltage and the rotor frequency. ठीक है. And the largest relative motion, important point students, कि जो हमारे पास largest relative motion है कहाँ आकर होती है, when the rotor is stationary, because rotor is stationary and the magnetic field is maximum, so the relative motion is maximum there. This is called the locked rotor or blocked rotor condition. So the largest voltage and rotor frequency are induced in the rotor at that condition. What about the smallest condition? So the smallest voltage, which is 0, and the smallest frequency 0 Hertz, it will occur when the rotor moves at the same speed as the stator's magnetic field, which actually results in no relative motion. ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो. ये वही पॉइंट है जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं कि वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मोशन. जितना रिलेटिव मोशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा. ठीक है जी. And the magnitude and the frequency of the voltage induced in the rotor at any speed between these two extremes. कौन सी extreme? एक हमने maximum वाली देखी, दूसरी हमने minimum वाली देखी. It is directly proportional to the slip of the rotor. ठीक है. slip क्या चीज है जी? S, जो हमने concept पीछे discuss किया था. Okay, therefore, if the magnitude of the induced rotor voltage at locked rotor condition, okay, at locked rotor condition, if that be ER0, then the magnitude of induced voltage at any slip will be given by this equation. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा किसी भी और पॉइंट के अलावा. सो आपको ER0 मालूम है किस पॉइंट के ऊपर है, जो आपके पास लॉक्ड रोटर का केस था. लेकिन अगर अब आपको किसी और पॉइंट पे निकालना है जिसके ऊपर यू हैव सम वैल्यू ऑफ स्लिप ऑब्वियसली, तो उस केस में आप जो है उसे इस तरीके से निकाल सकते हैं. सिमिलर रिलेशनशिप आपको मिलेगा फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर. सो ये रिलेशन हमने पीछे भी देखा था स्टूडेंट्स, याद है लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने ये रिलेशनशिप यूज किया था. सो एफ आर इज एक्चुअली इक्वल टू एस इंटू एफ ई. Okay, so this voltage which will be induced in the rotor, ठीक है, and that rotor it has some resistance and the reactance as we saw in the equivalent circuit, the transformer equivalent model. And the rotor resistance RR, there are two terms basically, one is RR while the other term is XR. This RR is actually pretty independent of slip, okay, except for the case of skin effect which we are not going to discuss here. While the resistance, while the reactance XR is actually, it's more related with this slip in a quite complicated way. So therefore this effect is pretty important and we need to see how this XR is going to be affected once the slip is actually changing. So the reactance of an induction motor rotor, it actually depends on the inductance of the rotor itself and also on the frequency of the voltage and current in the rotor. So if the inductance of the rotor is LR,
Then the rotor resistance is given by, ठीक है, sorry not resistance, reactance. Students हम पढ़ चुके हैं reactance का क्या formula होता है, it's simply XR is equal to omega R into LR, ठीक है, ये 2 pi F into LR. Remember this is for the rotor side, therefore FR will be the frequency of the rotor and LR is actually the rotor inductance. Okay, now we discussed the relation for FR in terms of FE. So we saw that FR is actually linked with FE via the slip. So let's put that relationship into this equation, which is F of R is equal to S into F of E. So place it here and then you will have this relationship. So now you see that XR is actually depending on this S. Once you simplify this, this will be this relationship. So XR is equal to S into XR naught. So what is XR naught? XR naught is 2 pi FE into LR. So this is the blocked rotor reactance, ठीक है, blocked rotor की यानी जब आपके पास blocked rotor केस उस वक्त ही आपकी reactance आ रही है. So now once we have this, we can draw the equivalent circuit. The equivalent circuit for this rotor circuit model will be as shown here. ठीक है, so this is your ER which is equal to S into ER naught. ये relationship हम पीछे देख चुके हैं. And this is the reactance. This is the reactance JXR, which is also dependent on the slip, whereas this term R of R is actually independent of the slip. Okay. So now once we have this circuit, we can actually find out the current that is flowing into this equivalent circuit. So IR will be simply nothing but voltage divided by the total impedance. So ER divided by RR plus JX of R. And once you put this X of R in terms of XR naught, then this equation will be given by this relationship. ठीक है, आई आर का हमारे पास रिलेशनशिप आ चुका है. नाउ इफ आई पुट द इक्वेशन द रिलेशनशिप फॉर ई आर इन टर्म्स ऑफ ई आर नॉट, देन दिस विल बी माय रिलेशनशिप. ठीक है, हमने क्या किया है, वी नो दैट ई आर इज इक्वल टू एस इंटू ई आर नॉट. ठीक है, ये हमने इक्वेशन के अंदर यहाँ प्लेस कर दिया है. आप सोच रहे होंगे एस कहाँ गया, तो हमने एस को डिनोमिनेटर के अंदर हम ले जा चुके हैं. एंड नाउ दिस इज माय इक्वेशन, and from this equation it is possible to treat all the rotor effects due to varying rotor speed, ठीक है, as being caused by the varying impedance supplied with the power from a constant voltage source ER naught. ठीक है, we have a constant voltage source ER naught और ये आपके पास impedances यहाँ आ रही हैं. So अब अगर मैं कहूँ कि equivalent rotor impedance क्या होगी, equivalent impedance rotor will be given by this equation. ठीक है, ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई है इम्पिडेंस की. Now once we have this relationship, we can actually find out another equivalent circuit for this model. So this is our equivalent circuit now. This is actually the rotor circuit model with all the slip effects concentrated is in this resistor RR. तो हमने क्या किया, सेम वही जो पीछे हमने रिलेशनशिप बनाए थे उन्हीं को देखते हुए ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया. ठीक है, you don't see any S terms here. It is only connected. It is only associated with this resistance RR. So now once we have this, we can actually plot the curve for current. ठीक है, this is the plot, and in this plot you can see there is some minimum point and there is some maximum point for the current flow. So let me show you this relationship for slip as well, जो आप पीछे देखते आ रहे हैं. So अगर हम बात करते हैं इन पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे क्या है आपके पास, व्हाट इज ऑन योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर nm, द स्पीड एट विच द रोटर इज रोटेटिंग. जितनी nm की वैल्यू क्लोज है आपके सिंक्रोनस स्पीड के, ठीक है, 100 का मतलब इट इज 100%, इट इज एक्जेक्टली द सेम एज द सिंक्रोनस स्पीड. तो आपके पास क्या हो रहा है कि बेसिकली देयर इज नो करंट फ्लो. ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्लिप इज इक्वल टू 0. कि जितना आपके पास s की वैल्यू कम है, ठीक है, जितना आपके पास s की वैल्यू कम है, यानी इस रीजन के अंदर आप देखें शुरू के रीजन में, तो यहाँ पे हो क्या आ रहा है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है रेजिस्टिव टर्म आर आर अपॉन एस, दिस विल एक्चुअली डोमिनेट दिस टर्म एक्स आर नॉट. ठीक है, देयरफॉर the rotor resistance it actually predominates, and the rotor current this varies linearly with the slip. It's like a linear relationship. जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखिए आप जितना यहाँ पे आ रहा है स्लिप की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है. ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है nm, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्लिप इज
actually increasing. So at higher slips, what is happening, that x आर नॉट, ठीक है, दिस टर्म, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी हो रही है, ये टर्म आपके पास इसकी वर्थ कम होती जा रही है. सो देन एक्स आर नॉट, दिस टर्म विल एक्चुअली बी मच लार्जर देन आर आर अपॉन एस. ठीक है. एंड द रोटर करंट व्हाट इट डज, इट अप्रोचेज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू एज द स्लिप बिकम्स वेरी लार्ज. ठीक है. जितना आप यहाँ पे जा रहे हैं आपकी स्लिप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ स्लिप विल बी मैक्सिमम विच इज एस इक्वल टू 1. Okay, so now let's connect the two models together. ठीक है. In order to produce the final model, what we have to do is कि जो हमारे पास ये रोटर का सर्किट यहाँ पे हमें मिला था, ठीक है, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, जो रोटर सर्किट मॉडल हमने बनाया था, दिस वाज ऑन द रोटर साइड, फॉर द रोटर साइड. ओके. अब हमें क्या करना है कि इसको अब हमें बेसिकली रेफर करना पड़ेगा टू द प्राइमरी साइड और टू द स्टेटर साइड. ठीक है. यानी ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है जे एक्स आर नॉट और आर आर अपॉन एस, what we have to do, we have to refer all these terms and also this voltage to the stator side. और उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप हमने पीछे पढ़े हुए, just like for an ordinary transformer, these are the relations which we are going to use. तो अगर आप प्राइमरी के ऊपर लेके आ रहे हैं तो this will be simply A into Vs. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, E R नॉट. तो जब ये प्राइमरी साइड के ऊपर आएगा तो this will be equal to A E R नॉट. ठीक है. सिमिलरली करंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई एस अपॉन ए. इन दिस केस दिस विल बी आई आर अपॉन ए इफेक्टिव. रिमेंबर ए इज आवर ए इफेक्टिव. एंड व्हाट अबाउट द इंपीडेंस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ए स्क्वायर. तो ये दोनों टर्म्स आपके पास जब प्राइमरी के ऊपर आएंगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स विद योर दिस इफेक्ट, दिस वैल्यू ए स्क्वायर. लेट्स डू दैट. तो आप देख सकते हैं आपके पास इवन, अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर आएंगे, जो बनाएंगे, जो टोटल इक्विवेलेंट सर्किट होगा, दिस विल बी द वोल्टेज. जब ये आपके पास प्राइमरी साइड के ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ए इफेक्टिव एंड दिस विल बी द करंट. ठीक है. एंड फाइनली दिस इज योर इंपीडेंस. अब ये आपके पास इंपीडेंस आ गई है, तो इफ यू मल्टीप्लाई देम टुगेदर दिस विल बी ए इफेक्टिव स्क्वायर इनटू आर आर अपॉन एस एंड दिस विल बी प्लस जे ए इफेक्टिव स्क्वायर एक्स आर नॉट. ठीक है. अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो ये टर्म है ए स्क्वायर इफेक्टिव इंटू आर आर, इसको मैं एक नया नाम दे दूँ तो दिस विल बी आर टू. ठीक है. तो मेरे पास Z2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी दिस टर्म जो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास ये टर्म है ए स्क्वायर इफेक्टिव इंटू आर आर, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, R2. सो Z2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन S. ठीक है. प्लस J, यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि ये जो टर्म है मेरे पास ए इफेक्टिव स्क्वायर एक्स आर नॉट, इसको हमने x2 कर दिया. सो नाउ Z2 विल बी एक्चुअली इक्वल टू R2 upon S plus JX2. So now we have this circuit. हम करने क्या जा रहे हैं, now we are ready to launch our final equivalent circuit or the per phase equivalent circuit of the induction motor. ठीक है. देखिए ये सब वही है बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था. This is the same. This is my E1 which is actually equal to A effective into ER naught and this is now JX2. देखिए this is JX2 और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, this is R2 upon S. ठीक है. यही जो मैंने आपसे कहा था Z2 क्या हो जाएगा, this will be R2 upon S and this I2 can be found out using this relationship of IR in term IR with A effective. So अब this is now my complete equivalent circuit, the per phase equivalent circuit of an induction motor. So now that we have the final equivalent circuit, let's discuss about the power and torque in induction motors. So we start again with the same discussion that induction motor, it actually behaves like a rotating transformer, obviously with some differences. कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे वहाँ पे भी आप इनपुट के ऊपर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो वहाँ पे 3 फेज अप्लाई करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी आप करते हैं. ठीक है. So but for an ordinary transformer की अगर आप बात करते हैं, the output is electric power from the secondary windings. लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो the windings are actually shorted out. So therefore there is no electrical output that exists from normal induction motors. ठीक है. Instead आपके पास जो output मिल रहा है, that output is mechanical. And the best way to describe the relationship between the input electric power and the output mechanical power is via the power flow diagram, जैसे हमने synchronous machines के अंदर भी देखा था. So let's have a look at the power flow diagram.
अब पावर फ्लो डायग्राम के अंदर इफ यू पे अटेंशन यू विल सी दिस इज योर इनपुट पावर, जो 3 फेज पावर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको लॉसेस इनकाउंटर हो रहे हैं वो कौन से हैं जी? दीज आर योर आई स्क्वायर आर लॉसेस इन योर स्टेटर। तो स्टेटर वाइंडिंग में आपके पास करंट फ्लो हो रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस आ रहे होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अमाउंट आपके पास कहाँ आ रही होगी? दिस विल बी लॉस्ट इन हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस। और ये कहाँ पर है आपके पास? कोर लॉसेस, स्टेटर कोर लॉसेस। और उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा? यू विल हैव सम अमाउंट, हमने ये तो बात कर ली सम अमाउंट ऑफ पावर इज लॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पावर है वो कहाँ है? इट इज ट्रांसफर टू द रोटर ऑफ द मशीन अक्रॉस द एयर गैप, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वी हैव आवर एयर गैप पावर। सो इफ यू पे अटेंशन दिस एयर गैप पावर इज नथिंग बट एक्चुअली द इनपुट पावर माइनस द stator copper losses and the core losses in the stator. If you do so, you will be able to find out your air gap power. After your air gap, then you are actually into the rotor part, ठीक है। और रोटर में भी आपके पास वाइंडिंग है, सो इन रोटर यू हैव योर कॉपर लॉसेस, ठीक है। and after that the power which you obtain is actually this power which has been converted into mechanical form, ठीक है। so this is why it is given as power converted, CONV, ठीक है। and once it is in the mechanical form, but remember जो output आपको load पे मिलने वाली है that is not going to be the same, there will be some mechanical losses, ठीक है। and these are basically your friction and windage losses। जैसे जैसे आपके पास मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आपके पास बढ़ते जाएंगे। जबकि जो स्ट्रे लॉसेस हैं, स्ट्रे लॉसेस आर दोज लॉसेस जिनको आप किसी कैटेगरी में डाल नहीं सकते। सो दीज आर एक्चुअली योर स्ट्रे लॉसेस। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्वियसली फिर फाइनली यू विल गेट योर आउटपुट पावर, ओके, व्हिच इज गिवन बाय टॉर्क लॉड इनटू ओमेगा एम, ओके। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमें मालूम है कि रोटर में भी हमारे पास वी हैव अ कोर, ठीक है। तो हमने रोटर के कोर लॉसेस को क्यों डिस्कस नहीं किया? सो बेसिकली आपके पास होता क्या है कि जो आपकी जो इंडक्शन मशीन है इट नॉर्मली ऑपरेट्स एट अ स्पीड नियर द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सो देयरफॉर द रिलेटिव मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड्स ओवर द रोटर सरफेस इज क्वाइट स्लो, क्योंकि बहुत क्लोज है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और जो रोटर की स्पीड है वो काफी एक हद तक करीब करीब है। देयरफॉर होता क्या है कि आपके पास जो रोटर के कोर लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेटर कोर लॉसेस। देयरफॉर हम क्या करते हैं कि उनको निग्लेक्ट कर देते हैं और इनफैक्ट यहाँ पे इनको लम कर देते हैं, दोनों को मिलाकर यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हम यहाँ की जो कोर लॉसेज है उनको हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। So I hope this power diagram, this power flow diagram is clear to you. If you need further reading, please go through the book and read page number 395 of Chapman. Okay, now we know about the power flow diagram. We are ready to solve example 7.2. Let's see what have been asked in this example 7.2. So we have a 480 volt 60 hertz and 50 horsepower 3-phase induction machine, basically a motor which is drawing 60 ampere at 0.85 power factor lagging. The stator copper losses are 2 kilowatt, ठीक है, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, and the rotor copper losses are 700 watt। ये कहाँ पर है जनाब? ये हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। The friction and windage losses are 600 watt, जो यहाँ पे आ गए, and the core losses are 1800 watt, ये आ गए हमारे पास 1800 watt, and the stray losses are negligible। and find the अब now we have to find the following quantities। इंतहाई आसान सवाल है students। so we have to find out the air gap power, we have to find the power converted, this power converted, ठीक है, and we also have to find out the output power। and once we have all these parameters, we can find out the efficiency of the motor, which will be nothing but actually the ratio of output power and the input power, ठीक है। अब देखिए इस पावर फ्लो डायग्राम देख कर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड एनी अदर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालनी एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर में हमें क्या करना पड़ेगा? हैव अ लुक। डू वी हैव द इनपुट पावर? वी हैव द पैरामीटर्स, वी हैव द टर्मिनल वोल्टेज, वी हैव द लाइन करंट, ठीक है, विच इज गिवन टू अस, एंड वी ऑल्सो हैव कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज 0.85। सो सिंपली आपने यहाँ पे पुट करना है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर इनपुट पावर and you have these two powers, so up air gap power will be nothing but input power minus these two components, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? you will be able to find out your air gap power।
Then in order to find out the power converted, which is at this point, what you have to do, you have to subtract the subtract the rotor copper losses from this air gap power. ठीक है, इसको आप करेंगे, you will be able to find out the value of your power converted. ठीक है, जो मैकेनिकल पावर है जो आपको यहाँ मिल रही है before actually considering the friction or the mechanical losses actually. ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगी जी? अगेन आपको जो कन्वर्टेड पावर आपको मिली है उसमें से आप इन दो लॉसेस को माइनस कर दें. इन दो में से स्ट्रे लॉसेस ऑलरेडी नेग्लिजिबल हैं. जस्ट सबट्रैक्ट द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आउटपुट पावर. ठीक है जी. सो आई होप दिस इज प्रीटी इजी फॉर यू. लेट्स हैव अ क्विक लुक. ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा ये बहुत आसान सवाल है. यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज. यू हैव योर इनपुट पावर है. ठीक है जी. अब उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों लॉसेस को माइनस कर दीजिए, स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस को. ठीक है, माइनस कीजिए. यू हैव ऑलरेडी द वैल्यूज विद यू एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एयर गैप पावर. ठीक है, अब उसके बाद अगली टाइम क्या करनी है, हम यू हैव टू फाइंड आउट द कन्वर्टेड पावर. उसके लिए क्या करें, रोटर के जो कॉपर लॉसेस है उनको माइनस कर लें इस क्वांटिटी में से. ठीक है, तो चलिए लेट्स डू दैट. So now here we have to find out the converted power. Again, we use this relationship. We have the values given with us. Simply plug in the values and you find out the value of your converted power. And in order, the next part is to find out the output power. Again, for output power, what we have to do, we have to subtract the friction and windage losses from the converted power. ठीक है, जब हम ये करेंगे we will get our answer. The stray losses are zero. Stray or the miscellaneous losses are zero. ठीक है, आप देख सकते हैं जीरो किया हुआ है, already given to us. Now we have our output power. अगर आप चाहें तो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट पावर को हम इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर भी दे सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हॉर्स पावर. अगर आपसे नहीं कहा है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. So once you have the output and input powers, finding out the efficiency is no big deal. Just plug in the values and you will be able to find out the efficiency of the system. ठीक है, दोनों का रेशियो निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई करें, you get your answer. So आपने देखा ये पूरा सवाल we were able to solve this question by simply considering the power flow diagram. The data was given to us and हमने इस power flow diagram को use करते हुए बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेशन की और we found out all the unknowns. ठीक है जी. सो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है that is actually still the same topic, power and torque in induction motor. We want to derive some relationship for power and torque, but I think we are already pretty close to 30 minutes mark. So therefore let's skip it for this class, and inshallah we start that topic in our next class. So आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आई होप आज के लेक्चर और इससे पिछला वाला लेक्चर जो इस वीक के दोनों आपको समझ में आ गए हैं. अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, यू कैन राइट मी एन ईमेल और यू कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग आवर इंटरेक्टिव सेशन. टिल देन इट्स मोहम्मद उवैस signing off. See you inshallah next week. Allah Hafiz.